ठीक है, तो resultant force will be calculated by sum of forces in the direction of motion minus sum of forces against the motion. So this is the way to calculate the resultant force. So in the equation F is equal to ma, F represents the resultant force that will be calculated by sum of forces in the direction of motion will be taken to be positive, and the sum of forces which are opposite to the motion will be taken to be negative. And one thing, acceleration will be taken to be positive. Acceleration will be given. Acceleration will be taken to be positive, while deceleration will be taken to be negative. So if it's acceleration, it will be taken as positive. If it's deceleration will be taken to be negative. Mustafa, one thing is important. In the statement of the question, deceleration will not have a negative sign. You have to apply a negative sign by yourself. So when you will find some question about deceleration in your past exams or in future exams, examiner will never give sign of deceleration. You have to apply a negative sign by yourself. So no signs are given in the statement of the question. You should write that. Sign of deceleration, negative sign of deceleration is never given. Negative sign of deceleration is not given by the examiner, but you have to apply it by yourself. And Musawa, one thing, in the mark schemes for answers, will they put a negative sign for deceleration? The answer is no. Deceleration will be given as a magnitude. For example, if you're reading mark schemes, so deceleration will have no sign. They will just write its magnitude. However, sometimes they will put a negative sign in the bracket. Acha, in your exam, the signs of scalars and vectors are treated differently. For example, if a vector is negative, it is because of its direction, and generally this sign is ignored in the mark scheme. However, if a scalar is negative, then its sign is given in the mark scheme. Mustafa, scalars के जो sign होते हैं, they are always given in the mark schemes. Signs of vectors are generally ignored in the mark schemes. Mustafa, is that clear? Yes, sir. Mustafa, if I ask you, signs of vectors or scalars, which ones are generally ignored in the mark schemes? The vectors. Vectors. And what is the reason for that? Because signs of vectors represent their directions. Signs of vectors represent their directions. If a velocity is positive or negative, it is because of the direction of velocity, and that sign is according to the convention of the direction. Generally, when you get a negative answer for a vector, that negative sign will be missing in the mark scheme. But that is not an issue, because in the mark schemes, they always give magnitudes of vectors. Signs are ignored. For scalars, signs are given. Acha, no. Negative sign of deceleration is not given by the examiner, but you have to apply it by yourself. Now we will solve some examples about F is equal to ma. You should write examples about F is equal to ma. Example 1. Example number 1. A lift is driven
Lalina, beta, if I ask you, generally lifts are driven by what? For example, in our daily life, we have lifts. Those lifts are operated by what? What is the driving force on a lift? Generally, any student? Mustafa? मुस्तफा, ये जो लिफ्ट्स होती हैं ये कैसे चलती हैं बेटा? सर एक तरफ वेट नीचे होता है तो लिफ्ट ऊपर जाती है। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि लिफ्ट को पुल कौन करता है? क्या पुल कर रहा होता है लिफ्ट को? Generally, they have cables. Generally, they have cables attached on the top of the lift, which are pulling the lifts. This is a general idea. Yes, cables. Acha, a lift is driven by a cable. The lift, the lift was moving upwards as shown. At one point of time, the lift was moving upwards and they have shown it. This is the lift, and this lift was moving upwards. This is the cable attached with the lift. ठीक है जी मुस्तफा, this is the cable and this is the lift. So this lift is driven by the cable. This is figure 1. Now you should write the lift in figure 1. The lift in figure 1 is moving down and decelerating. The deceleration of the lift, the deceleration is A. So as I have told you, the examiner will never give a negative sign for deceleration. They will just give you the magnitude. Here they said the deceleration is A, not negative A. So you know that the deceleration will be taken to be negative, but the examiner will not give that negative sign. No, the first part of the question. Represent forces on the lift in figure 1. Acha Mustafa, if they are using a word represent or list in the question, what is the difference? If they say list the forces or they say represent the forces, what is the difference? The list, they're asking you to write them down, and represent, they're asking you to show them on the. Yes. So how many forces are there on the on figure 1 on the lift? Mustafa, how many forces are there? Sir, two. Two forces. Lalina beta, name them. Name the forces. Sharam, can you name the forces? Sharam? Anyone, any student, beta, can you name the forces? So, Mustafa, the forces are the weight of the lift that is acting vertically downwards. The weight of the lift, mg, that is acting vertically downwards. This is weight of the lift. And Mustafa, tension in the cable. Mustafa, tension in the cable will be towards the lift or away from the lift? Elizabeth, what do you think? Tension in the cable will be towards the lift or away from the lift? Away from the lift. Away from the lift, because tension is a pulling force that always acts away from the object on which it is acting. So one force is the weight and the second force is the tension. So tension on the lift is acting away from the lift, or you can say it's acting upwards. So tension in the cable represented by T. So these are the two forces acting on the lift. Now, second part of the question. Mass of the lift is
m. Now the first thing that you're doing is write an equation for the resultant force. Write an equation for the resultant force on the lift. So, Musa, what do you think? What will be the equation of resultant force on the lift? First of all, we'll observe the direction of motion, and then the forces which are acting in the direction of motion will be taken to be positive. The forces which are acting opposite to the motion will be taken to be negative. Musa, the forces which are acting in the direction of motion will be taken to be positive or negative? Musa beta. Positive. Positive. And the forces which are acting against the motion will be taken to be negative. Negative. No, motion of the lift is downwards or upwards? Can you read the question and tell? Downwards. Downwards. So first of all, you should label the motion. Here, the motion of the object is downwards. Now, Lalina beta, the force that is in the direction of the motion will be positive, and the force that is against the motion will be negative. Musa, out of mg and t, which one is positive and which one is negative? mg is positive, t is negative. Mg being in the direction of motion will be positive, t being opposite to the motion will be negative. So resultant force on the lift will be equal to mg minus t. This equation will change if the motion of the lift is upwards. Elizabeth, if the motion of the lift is upwards, then what will be the equation? For downwards motion, we are moving with mg minus t. What if the motion is upwards, beta? Elizabeth? mg plus t. Nahin, beta. If the motion is upwards, then t will be positive and mg will be negative. So the basic idea is that the force which is in the direction of motion will be positive. The force which is against the motion will be negative. So here it is mg minus t is the resultant force. Lalina beta, aa gayi samajh? Lalina beta, understood? Mustafa, Anis, aa gayi samajh? Mustafa, are you there? जी सर मैं कह रहा हूं समझ आ गई? जी सर समझ आ गई है मुस्तफा, तुम नींद में हो, इतना मतलब मरी हुई आवाज में रिप्लाई कर रहे हो। एक्टिव होके बैठो ना, सर तबीयत बहुत स्लो हो तुम आज। सर मेरी तबीयत थोड़ी खराब चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अलीजा बेटा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज राइट एन इक्वेशन relating m, g, t and a. They want you to write an equation for the forces and the deceleration. Elizabeth, they want you to write an equation for the forces and the deceleration. Now the equation will be, you should always write resultant force. First you should write world equation. Resultant force is equal to mass times deceleration. Elizabeth, क्या इक्वेशन लिखेंगे? Resultant force is equal to mass times acceleration or deceleration. Now here it would be resultant force is basically mg minus t, and that will be equal to m times, Elizabeth, positive A or negative A? Quick answer. Negative way. Negative A. Why negative? Because it's deceleration. Negative because it's deceleration. So negative A. So the equation will become mg minus t is equal to m times negative A. अलीजा बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। जैन, आपका कोई क्वेश्चन है यहां तक बेटा? जैन, कोई क्वेश्चन यहां तक? जैन बेग? नहीं सर। चलो आगे चले जाएं फिर। ठीक है जैन, आगे मूव करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Third part of the question is mass of the lift was 200 kg. Acceleration due to gravity in A level syllabus is taken to be 9.81 if not given by the examiner. Let me repeat that. Then, acceleration due to gravity is taken to be 9.81 if not given by the examiner. Mass of the lift was 200 kg. G is 9.81 meter per second square. At one instant, the lift was moving down with a speed of 20 meter per second, and its deceleration was 3 meter per second square. What will be tension in the cable? What will be tension in the cable at the given instant? So Musa, what will be tension in the cable at the given instant? Musa, इस क्वेश्चन का क्या मेथड होगा? What is the method for this question? बताओ. So substitute all the values into the ये part 1 में जो equation जो बनाई है. हाँ जी, पार्ट 1 में जो इक्वेशन बनाई है उसमें values should be substituted. So basically, it's moving down, it is decelerating, so it will become mg minus t is equal to m times negative a. Why negative a? Because it's deceleration. So mg minus t is equal to minus ma. अलीजा बेटा, कोई कंफ्यूजन है या आ गया समझ? आ गई समझ ना. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट वुड बिकम, इट विल बिकम 2000 into 9.81 minus tension is to be calculated, and then it is negative. So mass 200 है. Mass क्या है? 200. अच्छा, जी. so 200 into 9.81, 200 into 9.81 minus tension will be equal to negative 200 into deceleration is 3. अच्छा मूसा, कैन यू टेल मैंने डिसलरेशन का नेगेटिव पुट क्यों नहीं किया? सर किया हुआ है लेकिन आपने बाहर से मतलब. हाँ जी, हाँ जी. और स्टूडेंट्स पेपर में एक कॉमन मिस्टेक क्या करेंगे कि दिस नेगेटिव इज ऑलरेडी देयर and they will put negative again. Aliza beta, this is a common mistake that student can do, कि you have applied that negative sign for deceleration already in the equation, and sometimes जब आप substitute करेंगे तो फिर आप negative फिर से लगा देंगे, तो you have to be careful about that. अच्छा, this is 200 into 9.81 minus t is equal to minus 600 if we solve it. 200 into 9.81 plus 600 is equal to t. So Musa, what is the answer for t? So 2562. 2562. और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन. Newtons. अच्छा, हम F is equal to ma की 2 एग्जांपल्स और करेंगे. We are doing 3 examples for this. ठीक है? So example number, this was example number 1. Now you should write example number 2. Aliza beta, example number 2 for F is equal to ma. Example number 2. You are given with a container of liquid. In that container,
a small metal ball, a small plastic ball. This is a plastic ball. This is a plastic ball of low density. And you know that if a plastic ball is immersed in water or some liquid, so generally it will rise up. Generally it will rise up. The plastic ball was moving upwards. It is given the motion of the ball was upwards. Now the question is, this is figure 2. The mass of the ball, in figure 2 is, the mass of the ball in figure 2 is 200 grams. Upthrust on the ball, is 6.0 Newton. Beta, upthrust on the ball is 6.0 Newton. The ball is moving up with a deceleration. The ball is moving up with a deceleration, balki acceleration kar lo. The ball is moving up with an acceleration of 1.0 meter per second square. Question ka first part. List 3 forces with their directions that are acting on the ball at the given instant. Elizabeth, can you list 3 forces which are acting on the ball and their directions? Quickly, beta. The weight is acting downwards, viscous drag is acting downwards, and upthrust is acting upwards. Okay, weight is always downwards, upthrust is always upwards. However, viscous drag can be upwards or it can be downwards, but in this example, it will be downwards because of the upwards motion. So the first force is weight acting downwards, and weight is always downwards. Weight acting downwards. Second force is upthrust. It always acts upwards. Upthrust acting upwards. Musa, why is viscous drag downwards? Sir, because motion is upwards. And viscous drag is the fluid friction. You know that. Viscous drag is the fluid friction. Viscous drag acting downwards, it always acts against the motion. Musa, koi confusion? No, sir. No, second part of the question. Use the information given to find the value of viscous drag represented by letter capital D. You are doing it by yourself. जिसका हो जाएगा thumbs up करना है. If you're done with this part, you have to make thumbs up.
बेटा ये आपने खुद करना है, एंड इफ यू आर डन तो आपने थम्स अप करना है, बट यू ओनली हैव 1.5 मिनट। लालिना बेटा ये खुद करना है, यू हैव 1.5 मिनट। इफ यू आर डन तो मेक अ थम्स अप। यावर ये आपने खुद करना है बेटा। वसफा बेटा, रुमैसा बेटा, मरियम मुस्तफा बेटा ये आपने खुद करना है। जिसका हो जाए थम्स अप करना है। हाँ मूसा हो गया। किसी और का हुआ? एनी अदर स्टूडेंट? ओके मूसा, आई थिंक अब हम मिलके करते हैं। मूसा, द फर्स्ट स्टेप विल बी वी शुड रिप्रेजेंट द फोर्सेस ऑन द plastic ball. When you represent the forces on an object, on an individual object, that is called the free body of that object. So free body, Elizabeth, free body क्या होती है? When you represent forces on that specific object. Okay, so free body is when you represent forces on a specific object, it's called free body. So free body of the plastic ball, so you draw that object and forces on that object. So on the ball we have three forces. They are weight of the ball, mg, upthrust, u, and the ball is moving upwards. Musa, is the ball accelerating or decelerating? Accelerating. The ball is accelerating, and the motion of the ball is upwards. Since the motion of the ball is upwards, that's why the drag force will be downwards. This is the drag force. Now, Elizabeth, if I ask you what is the equation of resultant force, can you tell? Sum of forces in the direction of motion minus sum of forces Forces opposite the motion. against the motion. Which forces in the direction of motion? Upthrust. Which forces are against the motion? Drag force and weight. So resultant force will be upthrust, that is in the direction of motion, will be taken to be positive, and the forces which are against the motion, they are weight plus viscous drag, they will be taken in the opposite direction. Elizabeth, clear? जी सर। ठीक है बेटा। बेटा अब अगला स्टेप क्या होगा? अलीजा बेटा आप बताएं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। F इज इक्वल टू एम में अप्लाई करेंगे ना? F अच्छा, F इज इक्वल टू एम में F क्या होता है अलीजा बेटा? F इज द, resultant force. हाँ जी, इस इक्वेशन में F होता है रिजल्टेंट फोर्स. सो वी हैव अप्लाइड रिजल्टेंट फोर्स is equal to ma, and resultant force will be equal to plus upthrust minus mg plus d, and that is equal to mass times acceleration. Now if we substitute the values, upthrust is 6 Newton. Upthrust is 6 Newton minus mg is, mass of the ball is 200 grams, but we'll use kilograms. So 200 over 1000. बेटा ये हो जाएगा 200 over
1000 and it will become 0.2 kilograms. So it will be 0.2 into 9.81 and then plus drag force that is to be calculated is equal to mass of the ball, that is 0.2, and then you have acceleration. Musa, what is the value of acceleration? 1 hai na? 1. 1. So 1 meter per second square. So it can be calculated as 6 Newton minus 0.2 into 9.81 minus D is equal to 0.2 into 1. So the final form will become 6 Newton minus 0.2 into 9.81 minus 0.2 is equal to D. Musa, what is the answer for drag force? 3.838. 3.838 newtons. And if you care about significant figures, then in the given data, what are the least significant figures, Musa? 200 gram is up to one significant figure. 200 gram is up to one significant figure. We never write our answer up to one significant figure, even if the least significant figures are 1. तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? So two significant figures. हाँ, इसमें हम कर लेंगे 2 significant figures. मुस्तफा, तुम्हारे नाम से कोई दूसरा बच्चा आ रहा है? One second, Musa. हाँ Musa, what is the answer? 3.8 newtons. ठीक है, और उसके जो significant figures हैं, they will become, we'll write it up to 2 significant figures. And reason for that, Musa? So क्योंकि least value पे 1 significant figure है और आंसर का भी 1 हम का नहीं आंसर में लिखते कितने हैं. लिखेंगे? 2 significant figures. So that will become 3.8 Newton. Acha, one last example about F is equal to ma, and then we'll be starting the next topic. Likho last example. Last example about F is equal to ma. Musa, last example for F is equal to ma. In this example, you are given with an inclined plane, and this is a horizontal surface. Elizabeth, this example is about an inclined plane. They have given you a ball, or you can say a ball or a box. Box bana do. Musa, they have given you a box, and the box is sliding downwards. The box is sliding downwards. This is the motion of the box. And the box is also accelerating. AB is the inclined plane. AB is the inclined plane. So AB is an inclined plane. The box is moving along AB, ठीक है? And the box is accelerating. Likho, AB is a smooth. Elizabeth, when we say smooth, it means frictionless. Musa, when we say smooth, it means frictionless. हाँ. So AB is a smooth or frictionless inclined plane on which the given box is sliding downwards. On which the given box is sliding downwards. First part of the question. List the forces acting
ऑन द बॉक्स। अलीजा बेटा आपने बताना है कि बॉक्स पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं। शाबाश बेटा बताओ। अलीजा बेटा, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द बॉक्स? 2 forces. 2 फोर्सेस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेम देम। Weight and friction. बड़ा सारा लिखा हुआ है स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। Oh, देख अच्छा. देख लें फिर हैं। Sir, weight and then दूसरा फिर I don't know the second one. मूसा, नेम द फोर्सेस, लिस्ट द फोर्सेस। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द बॉक्स? लालिना बेटा, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द बॉक्स? मूसा बता दो जो भी समझ आ रही है। अच्छा, वेट तो हो गया, वेट हो गया, फ्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटा, द अदर फोर्स विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या होगी? नॉर्मल। अलीजा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी ना, जो सरफेस एग्जर्ट करती है। तो बॉक्स पे वी हैव 2 फोर्सेस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन अ सरफेस, द अदर फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो मुस्तफा कितनी फोर्सेस हैं? वी हैव, मुस्तफा, मूसा, मूसा कितनी फोर्सेस हैं? वी हैव There are two forces. 2 फोर्सेस। नेम देम। Weight and ठीक है, सो वन ऑफ द फोर्सेस इज weight of the box, and Musa, the other force is? The other force is normal reaction force. So if we, अच्छा हमने रिप्रेजेंट भी कर दिए, ठीक है, हमने रिप्रेजेंट भी कर दिए मूसा, हमने फोर्सेस को रिप्रेजेंट भी कर दिया। अच्छा, तो कौन सी फोर्सेस हैं बेटा? एक फोर्स है वेट और एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फर्स्ट फोर्स, वेट एक्टिंग, वेट mg acting downwards, and second force is Musa, normal reaction force, normal reaction force are acting perpendicular to the surface, acting perpendicular to the surface. मूसा ये समझ आ गई यहां तक? जी सर. अच्छा मूसा, अब क्वेश्चन का लिखो सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो, y is r, r stands for normal reaction force. Y is r ignored while calculating acceleration. अलीजा बेटा, इसमें एग्जामिनर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और कुछ आपसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? बेसिकली वो कह रहा है कि जब हम एक्सलेरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आर को इग्नोर करेंगे। क्या कह रहे हैं वो? कि जब हम एक्सलेरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आर को करेंगे इग्नोर। ये वो खुद बता रहे हैं, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ आर को क्यों इग्नोर करेंगे। आप मुझे ये बताएं अलीजा बेटा, आर का मोशन के साथ क्या एंगल है बेटा? क्विकली, आर का मोशन के साथ क्या एंगल बन रहा है बेटा? 90. 90 डिग्रीज, ठीक है। दैट्स व्हाई if a force is perpendicular to the acceleration, then you are going to ignore that. लालिना बेटा, अगर कोई फोर्स होगी perpendicular to the acceleration, उसको क्या करेंगे बेटा? उसको इग्नोर कर देंगे। कंफ्यूज हो रही है? ये समझ आ गई? नहीं आई समझ? माइक ऑन करके बताए ना। It's fine. I was just gonna say that they cancel each other out since they're vertical forces. नहीं 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 नहीं, वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है। वो रीजन भी हो सकती है, जैसे वेट का कंपोनेंट और आर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, वो एक रीजन हो सकती है। लेकिन लालिना, यहां पे हमने जो रूल बताना है वो ये है, आप ये रूल हर वक्त अप्लाई करेंगे। वेन एवर अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, देन while calculating that acceleration you ignore that. Simple rule. If the acceleration is horizontal, vertical forces will be ignored while calculating that.
If the acceleration is vertical, horizontal forces will be ignored while calculating that. And if the acceleration is in a certain direction, then any force which is perpendicular to that acceleration will be ignored while calculating that acceleration. बेटा रूल समझ आ गया? मूसा ये रूल एक बार स्ट्रेट कर दो कि जब हम कोई एक्सलेरेशन कैलकुलेट करेंगे तो विच ऑफ द फोर्सेस विल बी इग्नोर्ड. जल्दी से मूसा. मूसा नॉर्मल जल्दी. रिएक्शन। मूसा थोड़ा लाउड बताओ ना, एक्टिव होके बताओ. लालिना बेटा यू शुड टेल व्हाट इज अ रूल के कौन सी फोर्स को इग्नोर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग अ सर्टेन एक्सलेरेशन. Well, we're gonna ignore the normal reaction force considering we're calculating the horizontal एंड acceleration. व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल. जनरल प्रिंसिपल क्या है? That if we're calculating like horizontal acceleration, we will ignore any vertical forces. जनरल प्रिंसिपल ये होगा, ये तो आप स्पेसिफिक बता रही है ना. जनरल प्रिंसिपल ये होगा कि एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन विल बी इग्नोर्ड while calculating that acceleration. So they are asking why is R ignored while calculating the acceleration in this question. तो we will say पहले हम जनरल रूल लिख देते हैं. जनरल रूल is that if a force is perpendicular, if a force is perpendicular to the direction, if a force is perpendicular to the direction of acceleration, if a force is perpendicular to the direction of acceleration, then we will ignore that, while calculating the acceleration. So whenever a force is perpendicular to a given acceleration, we will ignore that. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? R is perpendicular to A, to acceleration, hence ignored. अलीजा बेटा आ गई बात समझ? बताएं मुझे. जी सर. रूल बताएं, रूल क्या होगा? जनरल रूल बताना है. व्हाट इज द जनरल रूल? If a force is perpendicular, so we will ignore परपेंडिकुलर that टू व्हाट? force. परपेंडिकुलर टू Direction व्हाट? of acceleration. हाँ पूरी बात करते होते हैं ना. अगर फोर्स होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन तो हम उसको इग्नोर कर देंगे. अच्छा बेटा क्वेश्चन का लिखें थर्ड पार्ट. वाई इज mg equals to ma इनकरेक्ट? हाँ जी, आपको क्या लगता है ये इनकरेक्ट क्यों है? देखें आर को आपने इग्नोर कर दिया तो बाकी फोर्स कौन सी रह गई? mg. वाई इज mg इक्वल्स टू ma इज इनकरेक्ट. मूसा बताओ. चले मैं बता देता हूं. मुझे बताओ mg जो है वो मोशन की डायरेक्शन में है या नहीं है? mg मोशन की डायरेक्शन में नहीं है. तो अगर कोई फोर्स मोशन की डायरेक्शन में नहीं होगी तो हम उस फोर्स को एज इट इज यूज नहीं करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे. तो mg इज इक्वल टू ma इज इनकरेक्ट बिकॉज mg इज नॉट in the direction of motion. We have to resolve mg and the component of mg that is in the direction of motion will be taken. mg मोशन की डायरेक्शन में नहीं है. अगर कोई फोर्स मोशन की डायरेक्शन में नहीं होगी तो क्या करेंगे? उसको रिजॉल्व करेंगे. अच्छा अब ये एंगल हो गया फॉर एग्जांपल थीटा. अच्छा अब आप ये लिखें कि mg इज इक्वल टू ma इज इनकरेक्ट. रीजन क्या बताएंगे मूसा इसकी? सिंस mg is not along the motion. बेटा mg जो है वो मोशन की डायरेक्शन में नहीं है, दैट्स वाई आप mg इज इक्वल टू ma नहीं कर सकते. क्वेश्चन का लिखें फोर्थ पार्ट. लिखो शो दैट a is equal to g sin theta.
अब मूसा ये वाला पार्ट हम काफी स्लो करेंगे। लालिना बेटा क्या शो करना है कि एक्सलेरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, जी साइन थीटा के। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेन इज स्मूथ, इट्स फ्रिक्शनलेस, द फोर्सेज ऑन द बॉक्स। हाँ जी लालिना बेटा, हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर ऑन द बॉक्स? देयर आर Two pieces. टू फोर्सेज। अच्छा, बॉक्स का मोशन इधर और बॉक्स का एक्सलेरेशन भी अलोंग द स्लोप। लालिना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, आर को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। Because it's perpendicular to the Yes, acceleration. yes. Any force that is perpendicular to the acceleration will be ignored. The second force is mg. So लालिना बेटा mg को as it is यूज करेंगे या रिजॉल्व करेंगे? Resolve. बताएं क्यों? Because it's still not in the direction of Because acceleration. mg is not in the direction of motion, we will resolve mg in such a way that one component is perpendicular to the motion and one component is along the motion. तो मूसा mg को रिजॉल्व करना हमने सीखा हुआ है कैसे? We draw a line perpendicular to the inclined plane and we draw a line along the inclined plane. लालिना बेटा ये वाला पार्ट हम क्लास में कर चुके हैं ना? ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये एंगल क्या होगा, व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल विल बी, Would it be the same as theta? यस मूसा याद है ना, ये एंगल थीटा होगा। सो मूसा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेट? mg cos थीटा। मूसा mg cos थीटा इग्नोर हो जाएगा, बताओ क्यों, जल्दी से। Sir, it is also perpendicular to the surface यस, and to the direction of motion or हाँ जी हाँ acceleration. जी। लालिना बेटा mg cos थीटा इग्नोर हो जाएगा, बताएं क्यों? It's perpendicular to It's acceleration. perpendicular to the acceleration. And the component that will take is कौन सा component? mg sin theta. So the component of the weight that is in the direction of motion will act as a resultant force. अच्छा, अब इस क्वेश्चन की हम समरी डिस्कस करते हैं। आर को हमने इग्नोर किया, लालिना बेटा आप रीजन बताती जाएं, मैं पूछता हूं आप बताती जाएं। आर को हमने क्यों इग्नोर किया, क्विकली? It's perpendicular to मुझे पता है acceleration. बहुत दफा हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, आर इज परपेंडिकुलर टू द मोशन तो इग्नोर हो गया। एमजी को रिजॉल्व क्यों किया, जल्दी जल्दी? Because it's not in the direction of इन द acceleration. डायरेक्शन ऑफ मोशन। एमजी कॉस थीटा को इग्नोर क्यों किया? It's not, it's perpendicular and it's not in the direction of यस, motion. और अब हम यूज क्या करेंगे, mg sin थीटा। mg sin थीटा क्यों यूज करेंगे? बिकॉज दैट इज अलोंग द मोशन है। तो अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज mg sin थीटा। अच्छा मूसा, अब हम जब अप्लाई करेंगे f इज इक्वल टू एम में, तो f में हम क्या यूज करेंगे, r mg cos थीटा या mg sin थीटा? Sin theta. और उसकी वजह क्या होगी, वी यूज द फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इट विल बिकम एफ इज mg साइन थीटा। अच्छा, कल की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास फिजिकल हो या ऑनलाइन हो या जो भी हो, हम उसमें लालिना बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यू विल बी गिवन विद फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड यू हैव टू डिसाइड कि विच फोर्स शुड बी इग्नोर्ड, विच फोर्स शुड बी यूज्ड, विच फोर्स शुड बी रिजॉल्व। एफ इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशंस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सलेरेशन। मूसा मुझे लग रहा है कि एम कैंसल हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो क्या रह गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। डन बेटा? ओके बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। अलीजा बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? चले मूसा No, आपका sir. कोई क्वेश्चन? No, sir. दामिल इमरान कोई क्वेश्चन बेटा आपका? दामिल ये जो आखिरी एग्जांपल की है ये टफ थी या आपको आ गई समझ? मैं आपका माइक ऑन करता हूं एक सेकंड। दामिल जो लास्ट एग्जांपल की है ये आपको आ गई है समझ या टफ थी? सर ये आ गई है समझ। ये शांति से ऊपर वाली थोड़ी सी थी, वो चलो भी आ ठीक है, गई। इसको फिर मूसा कौन सी एग्जांपल सबसे टफ थी जो तीनों एग्जांपल थी उसमें से? लेफ्ट वाली,
प्लास्टिक बॉल वाली या ये लास्ट वाली? मेरे ख्याल से लास्ट वाली। लालिना बेटा मुझे लास्ट वाली लग रही है, पता है क्यों? इसमें फोर्सेस को हमने इग्नोर करना था, रिजॉल्व करना था, तो आई थिंक इसमें ज्यादा काम था। चलें कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर बच्चों, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।